fan favorite teams and then finals. So this is champions we do. It's going to be Team BTR and it's going to be Team Flash, right? BTR from Asia Battle Ghost Chapter third. I mean, sorry, second. What do you think? Into the upcoming phases, can we see Team BTR again winning any of the phases? Probably it looks like it, I mean, with the way things went, at BTR, especially chapter two, I mean, coming in, they were the different moment. We do have a new champions for phase one. We'll see if BTR can absolutely be outrageous this time around. Maybe get themselves a better position in the playoffs and make it to the grand finals. Because last time, unfortunately, they didn't even make it to the grand finals, which was quite unfortunate. And I don't really think any one of us expected that to happen. So yeah, a lot of these players are going to be looking out for the side of BTR as well. I'm looking out for the teams that have performed well. HKG, Yangon Galacticos, Boom as another one. Horror Esports, I mean, a great ending to us phase one. Let's see if phase two they can pick up the pace. This is the event roadmap for you guys, for anyone wondering. Once again, phase one, we're done with it. Phase two and phase three, well, we're starting off with phase two today. Exactly, this is phase 2 indeed. But let's just have a look on the groups because मेरे को हालांकि पता है that हमारी audience को पता है groups क्या है and they are checking the descriptions of the stream as well simultaneously to see the group. But let's just have a look Edge because we can see Team BTR, RRQ, Team Flash, Skyforce, DRS Gaming, Team Hong Kong, ASID Esports, T2K Esports and Emins Esports. So Group Blue, we know that this team and particularly this group is consists of like good teams. Like all of these teams, they have a good balance. Team Flash on the other hand, they are really aggressive. DRS have a very calm and composed gameplay. BTR on the other hand, they do have a high pace, they have an aggression in them, they do go with the slow pace as well. So Edge, Group Blue is also looking promising, and the other group is going to be Group Green and Group Red. Yeah, these groups we kind of have to wait and see. There are a few changes, though, but as you said, all the audience and everyone's are probably gonna be already familiar with the groups and players and the teams that are gonna be jumping in. And yeah, Team Flash, Rue, RIQ, that is, and Bigatron. I believe there's gonna be an amazing group here jumping up along with DRS as well. And Skyforce is another squad that we kind of didn't really get to see in the grand finals. So I kind of am hoping to see if they're going to be stepping up this time around. Maybe face two grand finals, they will probably be the ones stepping up huge. And yeah, hoping to see some amazing gameplay from them. But these are the teams from Group Blue. We will now be heading to take a look at Group Red and Group Green as well. For anyone wondering, once again, today is the first day of the phase two. We will only be taking a look at Group Blue and Group Green. So Yep. Group Red, well, they will be coming in to play tomorrow. These are the teams in Group Green, though, ladies and gentlemen. We have Boom Esports, Void Esports, 313. Well, finally, they are going to be showing up as well. It's about time. I mean, we witnessed second chapter, and now chapter 3. Well, 313. Let's see how things turn out for them. Phoenix Rise, Yangon Galacticos, Team 52, Four Tribes, Team Secret, and Team Warga. Warga, unfortunately, was also I believe the only Pakistani team that didn't perform well Yeah. the playoffs in phase 1. 313 coming in as well. I want to see the players that are going to be in the team. I believe it's a new iteration because, yeah, I mean, in chapter 2, we had the players in a different playing under a different banner right now. So we'll wait and see. There are 4 Pakistani teams in Group Green. So this is going to be interesting. Oh man, absolutely. This is going to be interesting for sure. And this is going to be Group Green for us. After this, we'll be having a look on the Group Red. And we know that Group Red is also way too chaotic. And there were a lot of teams from Group Red we have seen in phase 1 just qualifying. And I mean, insane performance it was. But Group Green, we are done. And there are a lot of Pakistani teams. And as we were talking about, Warga great into the playoffs qualifiers and phase 1. But Edge, they had a really good ending, right? They did perform amazing into the finals, final day of playoffs. But unfortunate for them, they weren't having great points to be in top 18. But I'm looking forward to this team and Edge, especially I want to see new faces and new teams in top 18s. I mean, there will be some repetitive teams, but there weren't. We haven't seen Team 313 Esports, Team Phoenix Rise. I mean,
both of the teams, they actually have an amazing potential and caliber. So I want to see both of the teams running in top 18. What about you? Yeah, definitely. I mean, 313, as you said, they're just joining up. And I mean, Phoenix Rise, we have not seen them in the grand finals, yes, in the top 18. But, they're the same squad as the Demon Esports, if I'm not wrong. They are the same players that are coming in. So, yeah, we know what the potential is. But 313, these are going to be players coming in. We don't really have a lot of information. So, we don't also have any expectations, I would say, coming in from this squad. But the bar is already set high by all the other Pakistani teams, right? We have four Yeah. tribes already setting up the bar really, really high, especially on the first day of the playoffs with three chicken dinners. We'll see how that turns out for them today as Group Red. Well, once again, looking scary. Alter Ego Ares, E Arena, D Xavier, Hora Esports, Glue, Alpha Gaming, Burmills Gauss, 2K Esports, and Team Panda. Once again, an explosive group. So, uh, yeah, when they come into play tomorrow, things are definitely going to be more chaotic than it is going to be today. Oh man, absolutely. I mean, we did name this group not Group Red actually, or Group Red. It's actually Group being so chaotic. It's just a chaos all over there. Ultra Ego, the Saviors, Hora Esports, Team Blue, Team E Arena, Alpha Gaming, as we were talking about, but especially take a name. It's going to be Team E Arena Edge because E Arena, we all they also have an amazing caliber, but into the previous one they weren't able to be in the top 18, not and they weren't able to qualify. I mean, there were some things went wrong. We'll be having an analysis, and we'll be having a short recap from phase qualifiers, I mean phase 1 qualifiers. But E Arena, I want them, I super duper want them into the grand finals top 18. So reminding to the audience out there watching, it's not grand finals. Yesterday we have seen phase 1 grand finals, and we did crown our winners, which were Flash, right? It's going to be phase 2nd, and it is going to be group matches. It's a round robin format. So all these teams, they have to come up in the fight and be the top 18 amongst these 28 teams. Let's see it. What is going to be the scenario? But this is Group Red, and this is the last group, if I'm not wrong. We did saw all our 3 groups, and man, oh man, we are starting off this venture again. It is going to be exciting for sure. 3 groups coming in once again, up to 27 teams, and only 18 of them will be moving forward. So once again, the teams that are in the top 16 plus 2 fan favorite teams, as we've talked about it. Once again, guys, I know you guys love this. We know you guys love this. I mean, there you go, already updated, and looks like this time SYED and 4 Tribes, their fans are going strong immediately. I mean, Warrior also. I mean, there you go, 4 Tribes once again coming on top. Anyway, let me remind you, ladies and gentlemen, I'm pretty sure if anyone joining us here from phase 1, they probably know what this is and they're familiar with this. But for anyone joining us right now for phase number 2, this is PUBG Mobile Asia Battle Wars Chapter 3, and this on your screen are the words that you guys are pulling in through. Well, anyway, these are the votings, and all you need to do to vote for your favorite team is type in hashtag your favorite team's tag in the chat for them to make it to the grand finals as fan favorite teams. We have 2 slots. Last time it was 4 Tribes and DRS making to the grand finals as fan favorites. Well, this time, let's see who it is going to be. 2 teams will be going up through to the grand finals as fan favorite, and apart from that, top 16 will be qualifying to the grand finals based on the point system. Yeah, एंड जो भी जनता हम लोग को अभी देख रही है, इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग आप लोग अपनी टीम को कैसे सपोर्ट कर सकते हो और कैसे वोट कर सकते हो, सो इट्स अ रियली सिंपल प्रोसेस. ऑल यू हैव टू डू इज टाइप अ हैशटैग, और जिस भी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका आप लोग एक बार टीम टैग लिखना. दैट इज इट. एंड आप लोगों के एक बार जरूर सेंड करना चैट सेक्शन में उस मैसेज को, एंड जो आप लोग का वोट है वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा. एंड योर वोट्स विल बी हियर एज वेल. एंड लुक एट दैट, आई मीन 4 Tribes के फैंस स्पेशली दे always सपोर्ट द टीम SYED Esports वर्ल्ड गए. सो शुरुआत में हम लोग को एक्चुअली अमेजिंग, देयर आर एक्चुअली 4 पाकिस्तानी टीम्स जो टॉप कर रही है शुरुआत में ही फैन फेवरेट के पायदान पे. देखते हैं कौन सी हम लोग को टीम देखने को मिलेगी. देखो, हम लोग को पहले से ही पता है दैट 4 Tribes के फैंस
अपनी टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली DRS के फैंस भी। बट देखते हैं इस बारी पाकिस्तान SYED स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे या फोर्थ राइव्स को, बिकॉज आई गेस SYED स्पोर्ट्स या वॉर गए, दे नीड दैट सपोर्ट ऑफ योर्स इन दिस phase 2. They need that plan B. But let's just have a look on the special gift we were talking about. And this is going to be the giveaway. देखिए giveaway में participate करने के लिए बहुत ज़्यादा simple step है. All you have to do is type exclamation giveaway in the chat section and आप लोगों को एक link मिलेगा chat के अंदर. All you have to do is just tap on the link and आप लोग एक redirect हो वेबसाइट के ऊपर, scroll down and आप लोगों को वहाँ पर एक image मिलेगा या फिर एक पोस्ट देखने को मिलेगा. जस्ट टैप ऑन इट एंड आंसर करना उन सभी क्वेश्चंस के करेक्टली, और उसके बाद में जो आपकी PUBG मोबाइल कैरेक्टर आईडी है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ नोटेड, एक भी डिजिट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल सही तरीके से आप लोग लिखना वहाँ पे एंड एंटर योर रियल नेम, नॉट इन गेम नेम बट एंटर योर रियल गेम एंड दैट्स इट. आप लोग गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लोगे एंड 5 विजेता वो ऐसे होंगे जिनको मिलेगा ये रॉयल पास. That is true. So make sure everyone, just type in exclamation giveaway in the chat so you can enter the giveaway. And yeah, well, all the best, I guess. Wait, it's wait, that wait, easy. Edge. It's actually not 5 giveaways. It's one actually, winner per. Yeah, it's one winner per match. So it's That's 6 every day. Royal Pass. Yep. Then- Yeah, it's a massive opportunity for the viewers and audience watching out there to win Royal Pass for yourself. Yeah, and please make sure to make sure to type exclamation mark and giveaway, then only you'll get the link, right? So ये सभी steps को आप बिल्कुल सही तरीके से एक बारी follow करना and you'll be in and you'll be there into the giveaways. Let's see हमारे पास कौन सा एक ऐसा विनर रहेगा जो हम लोग को मिलेगा पहले मैच के अंदर. Bridge, let's just talk about the games as well, right? Because we are having 6 matches today as well, and it is going to be Rondo, Erangel, and Miramar, and the cycle repeats itself. What are your expectations coming in from the map of Rondo? Once again, with Group Blue and Green coming in, we can once again see 4 tribes coming into the map of Rondo, and we all know that they are the one squad that is absolutely dominant on this. But give me 1 second. I'm kind of confused. Did we see Team Secret? What group is it? Group is Team Secret in? I don't recall. Okay, they are in Group Green. Never mind. They are in Group Green. Yeah. So it is going to be interesting. For a second, I was confused there. I was like, wait, did I not see Team Secret? Because once again, the 2 teams that come to my mind as soon as I hear the name Rondo are 4 Tribes and Team Secret. Both of these teams are really good in terms of elimination points on that one, and we've already seen all 3 go how good they were, but we will not be witnessing them today as they are in Group Red. So we'll see them tomorrow, but for now, I'm expecting PTR to step up as well. There's Flash, the reigning winners, the champions, and a lot of these players are going to be looking out to take them down pretty early into the game as well. HKG, I kind of want to see how they turn up, how they start off the day here in the playoffs. Last time, phase 1, not so great, but they did have their ups and downs. 4 tribes, of course, they're going to be the ones everyone's keeping an eye out, and Team Secret, both them being in the Group Green. This group is looking scary, especially on the map of Rondo. And absolutely, that is the case, and we will be starting off really, really strong on the map of Rondo, as you did tell that Team Secrets, they are looking so much insane on the map of Rondo. Let's see क्या वो लोग राउंड के मुकाबले के ऊपर कुछ और भी ज़्यादा अच्छे एलिमिनेशन लेने के बाद में शिकंडे निकाल पाते हैं या फिर नहीं. Because Edge, it's all about the first initial matches. It's all about that first impression you are giving up. So Edge, I mean, it's going to be ready for teams to win the first match itself, and then after it they will be having a great kickstart into the overall standings and the point system. So I mean, we do have some names, we do have some teams, but we don't want to say anything, right? It's all about that suspense coming in. But this is just going to be day number 1, and we will be having 6 days. Just reminding you, the audience again joining right now and witnessing Asia Battle Boost Chapter 3 for the first time. We are having 6 days of total dominance coming in and 6 days of playoffs qualifiers. Yeah. And then we will be having 16 top teams, and then
two fan favorite teams, but man, oh man, Team Flash. I just gotta say it, man. They just totally dominated everything in phase one. There was no competition. There were Team Flash and their players everywhere, and especially tops and bows. Man, what an immense level of performance they have shown from the phases till the grand finals. Let's see, Edge, can they actually make the same thing, and can they actually perform and dominate the lobby the same way into the phase two? What do you think? I mean, as I've already talked about it, Team Flash, they were unstoppable here coming in from Yeah. in phase one. Vika, Tops, Bo, Zeus. I mean, all of these players were absolutely insane. Zeus, I mean, ever since playoffs, he was the MVP as well overall. Coming in very, very strong. And then as we moved on, Vika started off the grand finals on a really good note, tops with a 1v4, 1v5, 1v6 almost. There we've Yeah. seen Bose in a situation against the RIQ and 52 Esports. They're pulling up chicken dinner as well. And once again, Zeus, he was always there to support the team. He was always there to with the firepower that he has. And the one good thing about Team Flash is the fact that all four individuals, their individual is killed, and the synergy between them is just insane. The one team that is consistently blowing my mind has to be Team Flash, and I am Yeah. not expecting anything less from them here in in playoffs of phase two and phase three as well. As a matter of fact, I think they will still keep delivering their best regardless of what the day is or who they're playing against. I mean, absolutely. Even if there is a single player of Team Flash remaining in the match, there's a possibility, there's a chance that Team Flash will be taking that winner chicken dinner. So this is it. I mean, Team Flash, kudos to you all. Huge congratulations on winning that one, and huge congratulations on taking the phase one. But let's see what you all got in the upcoming phases. And I think the players, they're all warmed up, man. Team Flash, it was just a trailer. The movie is That remaining, is I true. guess. It definitely does feel like it. It was just the beginning of Yeah. the reign that they are probably gonna be holding over us for a while. But I mean, once again, we have seen some really good performances coming in from Voin, Yeah. from Fourth Rise as well. I mean, Fourth Rise, they were performing great ever since playoffs, but Voin in playoffs they didn't really do that much. Coming into the grand finals, they started off strong and they never let go. The other team that was doing really well in the grand finals was Alter Ego Ares, but they kind of did fall off to, I believe, 7, 8, 9 position, towards the sixth position, I believe. Anyway, towards the bottom of the first page there. So yeah, Alter Ego Ares is going to be another team. Did not get any chicken dinners in the grand finals in phases. They did get a couple here and there every day. They're getting one, so I believe they got 3 to 4 towards the end of the playoffs. There, RQ Ru, another team that I'm looking forward to because their positioning was also decent. Boom ended well, with the momentum in their favor towards the end. But another team that absolutely, went insane with the chicken dinners has to be 52 Esports, the only team with 3 chicken Yeah, dinners man. in the grand finals on the same day, by the way. So Yeah. that was absolutely ridiculous. So 52 Esports, I think this Malaysian team is probably be a pain for some of these teams. Yeah, I mean, that's the case. And let's just talk about the Pakistani teams as well in the grand finals of phase one. Yesterday, we are just talking about, and previous 4 days of only two teams which were the level of consistency four tribes, they were at the top second, right? They were on the second spot. Even the one single chicken dinner, or even they had 2 or 3 chicken dinners, tribes could actually dominate Team Flash. But Team Flash being the best right now, I'm looking forward to the Pakistani region as well because the teams are looking really strong, especially Team Wargay. I mean, there were a lot of blunders Team Wargay did in the previous playoffs and phases. I mean, those 1v4s and Agent 47 going ham in the squad house. We do remember that in the ninth stage, and Wargay, there was a possibility, right? Taking that winner chicken. And let's see कि आगे वाले समय के अंदर कैसे ये सारी पाकिस्तानी टीम्स कैसे खेलती हैं, एंड होपफुली हम लोग को और भी ज़्यादा पाकिस्तानी टीम्स देखने को मिले हमारे अपकमिंग ग्रैंड फाइनल्स के अंदर. बट मैं कुछ टीम्स तो आई मीन स्पेशली मैं एक टीम को ज़रूर देखना चाहूँगा, वो रहेगी हमारी टीम ई अरीना ई स्पोर्ट्स. मैन, उन लोगों की परफॉर्मेंस पिछले बैटल वर्स चैप्टर सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी. बट अभी के लिए ई अरीना उन लोगों के पास एक बहुत ज़्यादा फ्रेश स्टार्ट रहेगा.
और हम लोग को पता है हम लोगों ने देखे थे NC2 फ्रॉम ई अरीना राइट इन प्रीवियस मैन, क्या ही भयंकर प्लेयर हैं और जिस तरीके से वो लोग अपनी M416 या फिर UMP को यूज़ करते हैं क्लोज रेंज के अंदर जाके एंड कोऑर्डिनेशन जो सिनर्जी के बारे में बात करते हैं, सो मुझे ई अरीना का नाम हमेशा से याद रहेगा एंड आई गेस टॉप 18 के अंदर या फिर वो लोग आ जाए या फिर ग्रैंड फाइनल्स में हम लोग को देखने मिल जाए तो शायद से 4 चांद लग सकते हैं इस वाले फेज के अंदर। बट एक बार हम लोग जरूर नजर डालेंगे मैप रोटेशन के ऊपर। हालांकि मुझे पता है कि हमारे ऑडियंस को कि मैप रोटेशन क्या रहेगा। हम लोग को 6 मैचेस देखने को मिलेंगे। पहला मैच रहेगा रोंडो का मुकाबला, फिर रहेगा इरांगल और मिरामार और दोबारा से ये जो 3 मैप है देखने को मिलेंगे। That is going to be the cycle of, map rotation there. Rondo, Erangel, Miramar coming in. And then again, Rondo, Erangel, and Miramar. We will be witnessing 2 Rondos. And I believe the first one's going to be blue and green. First day, that is, of course. So tomorrow, make sure to come back up. It's going to be blue and red. So, this time we don't have to wait 3 days for the side of Group Red to come into play. We'll be witnessing them tomorrow itself. So Group Blue and Group Green, I'm sorry. These 2 groups are going to be facing off against each other for the next 6 maps. So maybe the first 2 maps, we will see a little bit of a different gameplay coming in. Maybe any changes in strategies we'll get to witness. We'll probably know. But from Miramar, all of these teams will be adapting to each other, and they probably will be feeling a little more familiar with each other, and that is when you will see the pace change. So I think this rounder is going to be very, very important to catch someone off guard, to be unique, to be different to other teams, and from your previous plays as well, because now everyone's expecting you to do the same. But if you do something different, then you might just be the ones coming on top, especially at the start of the day. Oh, and absolutely, that's the case. And this is the map rotation. And looking forward for the teams. And as we were talking about, like, we'll be witnessing 2 of the groups fighting all together and going all out. Let's see which team and from which group there will be a team coming up top and taking that first winner chicken dinner, because it's all about that initial battle. It's all about that initial match with Neve and structure into the upcoming matches. But let's see, Edge. We are starting off with the first match, which is going to be Rondo. Without any further ado, ladies and gentlemen, let's just start phase 2nd, and this is going to be the first match. There you go. We just ended with phase 1. We had our champions, and now heading down to phase 2. First match here in playoffs. Let's see if any of the teams at the top that were at the top in phase number 1, can they perform the same, or do we have other teams stepping up? And will we see a difference in the equation as we head down to Rondo, Joutin, towards Tin Long Garden? We've seen a couple of teams do go towards Tin Long Garden towards the end of the Rondos there. Changing drop location. 4 drives are also are they changing? Because I think T24 already dropped in. We'll wait and see if 4 drives are actually going to be changing their drop location. Usually they are leading towards New York's factory. Team Secret, on the other hand, looks like they might go towards Lanpur, Long Ho. Both of these really good locations. There are a couple of recall towers there, so they can actually go for that. But there is another squad. I believe that is Boom behind them. Yeah, it is Boom. So Team Secret and Team Boom Esports, both these teams might get into a fight pretty early, and we're still waiting for the circle to come into play, as we don't see a lot of any of these teams actually, as a matter of fact, going towards that northeastern part of the map. The dry part, it's left empty. It's very, very dry at the moment. New York's factory, test track, all of these are still in the circle. Default circle, not a major change. Not a major change, of course, and ये जो जोन है, हालांकि बहुत सारी टीम्स को एक एडवांटेज जरूर देखा जाएगा, पर एक बार ही हम लोग जरा नजर डाल देते हैं DRS के ऊपर. YT Frag and Cyclone and that smiley face name, I just can't pronounce it, that's the thing I can say him. But देखते हैं इस फाइट के अंदर यहाँ पर क्या हालांकि हम लोग को देखने को मिलेगा. DRS गेमिंग के पास ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं है. 2 तो प्लेयर यहाँ पे जा चुके हैं, मजीद बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे एक साथ आ चुके हैं. जिस तरीके से यहाँ पर टीम 4 थ्राइव्स
बरकत करेंगे इस मैच के अंदर। देखने वाली चीज है कि 3-1-3 ई स्पोर्ट्स भी आ चुके हैं। बहुत सारी टीम्स, एक्जैक्टली 4 टीम्स का क्लस्टर जो यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर देखने वाली चीज रहेगी किस प्रकार से 3-1-3 ई स्पोर्ट्स, 4 थ्राइव्स और डीआरएस गेमिंग बच के जाएंगे। फीनिक्स राइज भी है यहाँ पर। सो 3 पाकिस्तानी टीम्स तो यहीं पर कूद चुकी हैं एज। और ये जो यहाँ पर हश्र होने वाला है इन टीम्स का, देखने वाली चीज रहेगी। कोई भी एलिमिनेशन यहाँ पर नहीं मिला है अभी के लिए। एएसआई टीम को K2 यहाँ पर एक प्यारा एलिमिनेशन निकाल के जाएंगे और इसके साथ में IQQ यूएमपी नॉक ऑफ नहीं ले पाएंगे। T24 की तरफ से यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्यारा कवर फायर आ सकता था, बट डीमन उनके एरियस के सामने नहीं थे, विच इज वाई यहाँ पर IQQ को नहीं बचा पाए। और हम लोग को पता है कि 4 थ्राइव्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इस टीम के लिए। कोई ना कोई एक प्लेयर तो रहेगा जो रिस्पॉन टावर के पास खड़ा रहेगा और IQQ को रिस्पॉन कर लिया जाएगा। सो फिनिक्स राइज डीमन ई-स्पोर्ट्स इन लोगों का पहले नाम था, नाम अभी के लिए इन लोगों ने चेंज कर लिया है। एंड फिनिक्स राइज इन लोगों की भी गन पावर बहुत ज्यादा खतरनाक रेंज के अंदर, और सभी प्लेयर्स की जो कोऑर्डिनेशन और जो सिनर्जी होती है बहुत ज्यादा अच्छी। BTR, they already lost one player. Now they might be in a bit of trouble. Things could turn out to be deadly for them. And as you said, 4 tribes, they already have one player towards the recall tower. They've already gone for that. They have 4 players standing. Look at the damage being dealt onto Hancock. I really like the play on the name there for him. Hancock. Really amazing. I'm not really sure if he's an actual chef or what. But really love the name coming in from him. Anyway, Team Secret and Boom are still going towards it. Going with that fight against each other, and looks like they might just get taken down early. And well, guess what? Third party interference coming in from ASI 8 and Boom. Is it Boom or Team Secret? I believe it's Boom that's gone. Yeah. Boom Esports. They started losing players from the first phase itself, and बहुत सारे players उनके जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मजीद players यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिंदा, और 3-1-3 Esports के एक player यहाँ पर दिखते हुए रहमान, कॉस्मिक और माफिया रहेंगे हमारे 3-man standing 3-1-3 Esports की तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर भी। देखते हैं अभी यहाँ पर 141 Esports के एशिया के अंदर क्या यहाँ पर ये जो प्लेऑफ्स चल रहे हैं इनके अंदर ये लोग क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं, और इस चिकन डिनर को अपने हिम्मत हाथों में लेके जा पाएंगे या फिर नहीं। बट 4 थ्राइव्स रिकॉल कर दिया गया है उस खिलाड़ी को जो यहाँ पे डाउन हो गए थे। सो 4-4 ई-स्पोर्ट्स के पास हालांकि 4 थ्राइव्स ई-स्पोर्ट्स के पास हालांकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है एज। बट द थिंग इज दैट 4v4 बैटल, राइट? कोई भी टीम यहाँ से उस बैटल को इनिशिएट नहीं करना चाह रही है। सब लोग वेट कर रहे हैं, घात लगा के वेट कर रहे हैं अपनी AKM असॉल्ट राइफल और शॉटगन्स के साथ में कि कौन सा प्लेयर ओपन के अंदर आए और कोई गलती करे और ओपनिंग दे, उसके बाद में शायद से हम लोग फाइट ले सकते हैं। बट इस रीजन में हम लोग देख सकते हैं कितनी सारी पाकिस्तानी टीम है। एक्चुअली हम लोग ने 3 पाकिस्तानी टीम्स तो यहीं पर है, 4 थ्राइव्स, 3-1-3 ई-स्पोर्ट्स और फिनिक्स राइज। व्हाट डू यू थिंक, व्हिच पाकिस्तानी टीम इज गोइंग टू सर्वाइव दिस हेल फाइट? I don't really want to say any predictions regarding those, because I feel like every time I want to name someone, they probably will get taken down instantly. It just feels like the caster's curse is hitting really strong. So I kind of want to refrain from doing that. So I want to stay on the safer side, just be safe, and hopefully get to witness some amazing action from these teams. From a lot of these teams, actually, as a matter of fact. Zeus is out in the open. Walker probably will be, getting the information onto him. A Molotov in the hands, though. Walker going for that reload. On the S2K, does have an M4 as well. So both of these weapons will be coming in. Cooking up a grenade. Will be heard. Great direction. Just not enough. Zeus cooking. Still insane. Oh my lord, that was a run.
तो अगर आप लोगों को पता नहीं है, फेज 1 के अंदर टीम फ्लैश हमारी विजेता बनी थी कल के दिन के अंदर। इन लोगों ने बहुत ज्यादा प्यारा खेला था। देखिए, हालांकि वो लोग कल के दिन के अंदर विजेता तो थे, बट टीम फ्लैश, इट्स येट अनदर मैच फॉर देम, इट्स जस्ट अ डिफरेंट मैच फॉर देम। और वो लोग सेम कंसिस्टेंसी के साथ खेलेंगे और ये लोग चिकन डिनर भी निकाल सकते हैं अगर इसलिए। तो देखते हैं क्या होगा। बट स्काई यहाँ पर पॉइंट्स बनेंगे हमारे सोलोमन स्टैंडिंग टीम वॉर गए। ओके, रेज सामने से शायद से एक स्मोलेट ग्रेनेड उनके ऊपर भी जाएगा राइलो की तरफ से। स्काई फोर्सेस तैनात अपनी एसट्रो के साथ प्रोटेक्ट करने का वैसे एज पे ये But again, those recall towers are very important. Yeah, I mean that's the case, and Sky Forces on War गए पूरा का पूरा यहाँ पर अपना दम झोंकते हो। और देखिए, एक स्टन ग्रेनेड या फिर एक स्मोक ग्रेनेड दोबारा से डाला जाएगा और ये जो स्मोक है जल्दी से वॉर गए एक ना एक टीम तो एलिमिनेट हो जाएगी। बट वॉर गए यही है मौका उन लोगों के लिए प्यारा चिकन डिनर निकालने के लिए, क्योंकि शुरुआती फेज के अंदर या फिर एक इनिशियल मैच के अंदर एक अच्छा चिकन डिनर रोंडो के मुकाबले से ले लिया तो एक बहुत ज्यादा प्यारा स्टार्ट हम लोगों को मिल सकता है। और देखिए रेज कितना प्यारा तरीके से एस्ट्रल के यूज कर रहे हैं, आगे की तरफ यहाँ पे चार्जिंग करेंगे। पता है प्लेयर बहुत ज्यादा लो है एस्ट्रल के कि ये जो क्लोज दरकार है कौन सी टीम जीतेगी, और मुझे लग रहा है रेज बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से अंदर घुसेंगे। जिनको यहाँ पे स्विच किया जाएगा यूजी से एस्ट्रल के will be reigning supreme edge, and there we have it, Wargate. कोई भी AI नहीं बोलेगा because Wargate are performing amazing. Or 3-on-3 though, on the other hand, 4 eliminations, a really good start for them, to be really honest. And at the moment, Phoenix Rise might be, you know, causing some issues for them. And there you go. This is what I was talking about. You immediately cast curse. As soon as I took the name of 313, immediately 2 players get taken down there. That's unfortunate. I mean, yes, I know it is coincidental, but at this point, it just freaks me out as well, you know? I mean, caster's curse could be a thing, but it's all in the head, I guess. You know? The domination coming out from these teams. Let's see क्या होगा। But SYED Esports स्प्रे यहाँ पर लेते हुए के esports के ऊपर डाउन किया जाएगा इग्निस को, but no, रिटेलिएशन फायर आएगा। SYED Esports बहुत ज्यादा प्यारी परफॉर्मेंस थी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर भी, बट अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। बट टीम फ्लैश यहाँ से होती हुई एक्चुअली एलिमिनेट, वाज इट टीम फ्लैश, वाज इट 313 Esports, एक बार हम लोग जरूर देखना पड़ेगा। बट आई गेस इट्स जस्ट गेटिंग कंफ्यूज्ड विद इट। बट क्रिप्टो वो जो ग्रेनेड था बहुत ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट कोई भी नॉकआउट यहाँ पे नहीं आ पाया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्रिप्टो एक प्यारा नॉकआउट और अपनी टीम को अपने कदमों पर संभालते हुए और उनको एक प्यारा सा कमबैक देते हुए इस फाइट के अंदर। एक शायद से प्रीतम एक और अच्छा नॉकआउट, और SYED Esports प्लेऑफ के फेजेस के अंदर ही इतना ज्यादा प्यारा ये लोग खेल रहे हैं। और देखिए SYED Esports 7 एलिमिनेशन लेने के बाद में रिवाइव भी कर देंगे और चारों प्लेयर्स दोबारा से तैनात हो जाएंगे अपनी बंदूक के साथ में। Iron still surviving as well. He'll probably get revived. There you have it. 8 eliminations. Great start for the side of Team ASI8. Edge. I mean, there was a team which got eliminated. Was it 313 Esports? Alright, I'm just getting a confused. We have a look for sure. But Team 52. What do you think, man? I mean, 6 greater eliminations they are having. And right now, Team 52, we do know कि कल के दिन के अंदर या फिर एक इन्होंने एक अच्छा मैच लिया था, शायद से वो कल के दिन के अंदर ही था। मैं एक बारी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर माय शॉर्ट मेमोरी लॉस। बट एज we have seen Team 52 picking up those chicken dinners, more than 15 points. So शायद से आज के दिन के अंदर वो चीज क्रिकेट करने का पूरा ट्राई करेंगे। स्प्रे यहाँ पर आ रहे हैं वाइन esports बाहर है, हालांकि तीसरा ही यहाँ पे स्टेज रहेगा, कोई बात नहीं है। जोन के अंदर एक अच्छी तरीके से रोटेट करेंगे, आईजीएल से अपना काम बखूबी तरीके से निभाएंगे और अपने प्लेयर्स और टीम्स का साथ देंगे। They definitely try to play as a team and come out on top. We'll see how that turns out for them. At the moment, barely surviving.
He's very, very, very low on health points, and he escaped that situation. But no, maybe not. Rage actually be able to take him down. Boxy, he will get taken down, and 3-1-3 as well. That is interesting. With 3 eliminations, but just could not keep up the momentum in their favor. 14 teams, 51 players in the 4 drives, 60. That is. टीम सीक्रेट्स द गॉन टीम 52 कितना अच्छे तरीके से उन लोगों ने यहाँ पर 10 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले और धीरे धीरे यहाँ पर बरकत कर रहे हैं इस मैच के अंदर। SYED स्पोर्ट्स 8 एलिमिनेशन, हालांकि इन लोगों के पास में आ चुके हैं मजीद बहुत सारे प्लेयर्स लोगों के आसपास में जरूर रहेंगे और टीम 52 को प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा। क्रिप्टो तैनात अपनी M416 और 4X के साथ में प्यारा सा एक बर्स्ट अगर देखने को मिल जाए और सैटिस्फैक्शन शॉट्स देखने को मिल जाए M416 से, शायद से 4 चांद लग सकते हैं इस गेम के अंदर। SYED स्पोर्ट्स अच्छी परफॉर्मेंस, अब इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखें और कंसिस्टेंसी रखें पूरे प्लेऑफ्स के अंदर एंड क्वालिफायर्स के अंदर, तो शायद से SYED स्पोर्ट्स दोबारा से एक बार टॉप टीम के अंदर आएगी और हम लोगों को देखने को मिलेगी अपकमिंग ग्रैंड फाइनल के अंदर। बट SYED स्पोर्ट्स एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और लंबा स्प्लिट। प्रीतम, K2 एंड क्रिप्टो, आप उनकी पोजीशनिंग देखिए कितना ज्यादा दूर। अगर एक भी प्लेयर यहाँ से नॉकआउट हुआ है तो रिवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा, आपके क्या कहने रहेगा? Yeah, I mean, definitely. I mean, if someone gets knocked out there, it's not going to be as easy as it would have. I mean, as they would have liked it. At the moment, 52 East was also looking really strong with 10 eliminations, 40-minute mark hit, stage 3 circle coming to an end. This is just game 1 of day 1 of phase 2. We still have a lot of matches, and we already see so many of these teams performing brilliantly. Even BTR didn't make to the grand finals in phase 1, but here 8 eliminations already, and they're not done yet. 52 Esports will try to increase that number from 10 to 11 at the moment. Actually will be successful to do so, and Cook will get taken down. 52 Esports now on the verge of eliminating side of BTR, but K2, beautiful play with the AUG, takes down Zeus and Team Flash. Well, they're coming to take down players on the side of ASI8. Looks like the plan is backfiring, and they might just get taken down. Well, I think one player, maybe 1-2 players at most on the side of Flash are still surviving. Yep, that's the elimination. आज देखिए SYED स्पोर्ट्स के प्लेयर, ये जो स्प्रेज हैं आज ये गूंज नहीं रहे, बात कर रहे हैं। प्रीतम भले यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, 2 प्लेयर्स यहाँ पे SYED स्पोर्ट्स के नॉकआउट हो चुके हैं। रिवाइव करने की जरूर दरकार रहेगी प्रीतम के ऊपर, हालांकि बहुत इजीली तरीके से रिवाइव हो सकता है। स्मोक किए जाएंगे, एक स्मोक की दीवार यहाँ पे बनाई जाएगी और तब तक एक अच्छे तरीके से उनको रिवाइव किया जाएगा। 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स और देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ते हुए SYED स्पोर्ट्स, मैं धीरे धीरे तो नहीं बोलूंगा, बहुत तेजी से यहाँ पर SYED स्पोर्ट्स अपने चिकन डिनर की तरफ शायद से बढ़ रही है। बट हम लोग देख सकते हैं एक टीम लोग जो सामने रहेगी और गेट कीपिंग का सिनेरियो SYED स्पोर्ट्स के खिलाफ यहाँ पे बन सकता है। सो बेटर रहेगा जल्दी से रिवाइव करें, जोन से जितना जल्दी हो भाग सके जोन के अंदर, तो बहुत ज्यादा प्यारी स्ट्रैटेजी रहेगी। IGL अपना काम बखूबियत तरीके से निभाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी SYED स्पोर्ट्स के लिए। और हम लोगों ने देखा ये सारी की सारी पाकिस्तानी टीम्स कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं प्लेऑफ्स के अंदर। हालांकि ये तो सिर्फ फेज सेकंड की स्टार्ट ही है, सो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे बन रही है। बट बूम ई स्पोर्ट्स पिछले ग्रैंड फाइनल्स के अंदर और पिछले फेज 1 के अंदर बहुत प्यारी परफॉर्मेंस। बूम ई स्पोर्ट्स जो इनिशियल लेवल होता है, जो इनिशियल स्टार्ट होता है, जो इनिशियल डेज होते हैं, बूम ई स्पोर्ट्स उनको बहुत ज़्यादा हल्के तरीके से लेते हैं और एंड के अंदर आके वो अपना असली नेशनल गेम प्ले दिखाते हैं। सो मैं बूम ई स्पोर्ट्स को तो एक ही सजेशन या फिर फीडबैक दूंगा कि अपना शुरुआत से ही दबदबा बना के रखें इंटरनेशनल लेवल में। That is what they do most of the time, and yeah, well, if they can just keep doing it, the consistency is probably going to be the one that what matters the most in these situations, especially. I mean, on Rondo, once again, we talked about it. These teams and these players try to get the elimination points. They focus on that more than the chicken dinners there. Because raining in, they will push him out, and well, BTR, they will lose a player, knock. And is that the end? I think that's another elimination coming up.
So BTR are going to be out of the picture as well. We're down to top 11 teams, 34 players still in the server. As Boom now put in the heat coming in from HKG. HKG, they've been, in a decent situation in the last playoffs, but the grand finals, they were at the very, very, very bottom, unfortunately. But ASI 8 now finals, they were at the very, very, very bottom, unfortunately. But ASI now fighting this, HKG can actually capitalize and maybe get a few more points. They're up to 3 now, but they're not done yet. Yeah. अभी SYED स्पोर्ट्स हालांकि जोन के अंदर तो पहुंच चुकी है। K2 यहाँ पर डाउन होते हुए और क्रिप्टो अपनी फुल एचपी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्रिप्टो एक ग्रेनेड यहाँ पर आ जाए तो अच्छा हो सकता था, बट नहीं, क्रिप्टो शायद से थोड़ा बहुत जल्दबाजी कर गए और अपने आसपास की सराउंडिंग्स या पीछे के जोन को क्लियर ना करना उनके लिए गलती साबित हुआ। और ASI स्पोर्ट्स जिंदा रहेगी सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ में। K2 अभी भी जिंदा है, सो उनके पास में एक होप है, एक रेखा है, शायद से हो सकता है इस चिकन डिनर को निकाल के लेके जा पाए। बट DRS गेमिंग नेपाली जाइंट्स हमारी स्क्रीन के ऊपर 4 एलिमिनेशन उन लोग के पास में भी रहेंगे, बट दाद देनी पड़ेगी SYED स्पोर्ट्स और टीम 52। 13 और 12 एलिमिनेशन। वॉर गे के पास में भी 8 एलिमिनेशन है, तो रुकने का नाम तो शायद से आज पाकिस्तानी टीम्स कहीं पे भी लेंगी नहीं। ग्रेनेड यहाँ पर जाते हुए स्प्रे यहाँ पर लेंगे K2, प्यारा स्प्रे। और AUG से टीम HKG, टीम हांगकांग के प्लेयर को यहाँ पे ढेर किया। चारों खाने चित करने की बारी, बट नहीं, एक और प्लेयर SYED स्पोर्ट्स का अपने कदमों पर और ग्रेनेड आ रहे सामने से। K2 जिंदा रहने का पूरा सर्वाइव करेंगे, का पूरा एक्चुअली ट्राई करना ही। दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर SYED स्पोर्ट्स। घिर गए थे इतनी सारी टीम से। गेट कीपिंग का जो सिनेरियो मैं बोल रहा था, वही चीज हम लोग को देखने को मिली, वही केस हम लोग को देखने को मिला। जो जोन लेने में समय उन्होंने व्यर्थ किया, दूसरी टीम जोन ली और उनको गेट कीप किया। What a start to phase 2. What are these action? What is this action that we're getting to witness? Absolute beautiful performance from a lot of these teams, and we're not done yet. What do you think? Who do you think is going to be the one coming out on top? Prediction time, Inferno, for you, because it feels like your, cast skill is much weaker than mine at the moment. I mean, that could be the case, but I don't know, man. Why esports मेरे को जो एक नाम बार बार खटक रहा है, क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, प्लेऑफ के फेजेस के अंदर, फेज 1 के प्लेऑफ्स के अंदर और क्वालिफायर्स के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। सो जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी। वाइन स्पोर्ट्स जो इनिशियल बैटल या फिर इनिशियल मैचेस के अंदर चिकन डिनर निकालने का पूरा ट्राई करते हो, वही चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। उनके पास में ज्यादा एलिमिनेशन नहीं है, सिर्फ 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स रोटेशन के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ से वहां से निकालने होंगे। सर्वाइव करने का पूरा ट्राई करेंगे। DRS और RRQ जो मिड रेंज की बैटल है उसके अंदर देखते हैं कौन अपर हैंड लेके जाएगा। और ये जो मिड रेंज की बैटल है क्लोज रेंज के अंदर कन्वर्ट होगी। और ये जो 4v4 की फाइट है, लैपर का जो नॉकआउट आया RRQ के ऊपर, बहुत जल्द रिवाइव हो जाए तो बेहतर रहेगा। पर 5 एलिमिनेशन सिर्फ RRQ के पास और DRS की टीम भी उन लोगों के सामने। साइक्लोन यहाँ पर डाउन हो चुके हैं अभी के लिए। DRS, can they capitalize? They still have 3 players standing on their feet. With only 4 eliminations, they gotta be careful not to get eliminated. Cyclone is gonna be out. Huzaifa on the side of Phoenix Rising will drop him. But the manpower that DRS has still is insane. Those 3 players are very crucial. Killer YT, Frag, and the smiley faces Inferno said. They're very, very important, and the grenade will be dealing a bit of damage onto Demon on the side of Phoenix Rising. Phoenix Rise, more like. As that fight will be, on hold at the moment towards both sides. They're trying to third party the fight between Boom and HKG, and they've not been able to be successful. Oh. And previously it was not Boom that did get eliminated, but now they will be the ones getting taken down.
एग्जैक्टली ग्रेनेड यहाँ पर आता हुआ जो ग्रेनेड है कनेक्ट कर सकता था, शायद से 1 सेकंड अंडर कुक रहता तो मे वो जो ग्रेनेड का कनेक्शन आ सकता था उस खिलाड़ी के ऊपर। वाइन ई-स्पोर्ट्स, दिस इज द पिक दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। फाइट लेंगे यहाँ बॉर्गे के अगेंस्ट और ये पहली 4v4 फाइट टीम वाइन ई-स्पोर्ट्स की स्टार्ट हो चुकी है। जो 2 एलिमिनेशन पॉइंट थे क्लोज रेंज के अंदर वाइन ई-स्पोर्ट्स ने निकाले थे ऑडियंस। एक बार आप लोगों को बता दूं, एक रोटेशन क्लैश के अंदर इन लोगों ने निकाले थे और टीम 52 ये जो हमारी टॉप 2 टीम्स हैं वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी हैं। 12 और 13 एलिमिनेशन लिए थे इन लोगों ने। कितना प्यारा परफॉर्मेंस है आज के दिन के अंदर। और 4 ट्राइब्स के फ्यूजन यहाँ पर एक अच्छा नॉकआउट निकालेंगे। 2 ही एलिमिनेशन यहाँ पे इन लोगों को मिले हैं। हुज़ैफा डाउन हो जाएंगे, एमवीपी है, ओवरऑल एमवीपी थे हमारे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर फेज 1 के अंदर, बट नहीं फ्यूजन उनके ऊपर भी एक ग्रेनेड आता हुआ और मे बी 4 ट्राइब्स एक बहुत ज्यादा गंदे सिनेरियो के अंदर अभी के लिए सोलो मैन स्टैंडिंग रहेंगे 4 ट्राइब्स के। क्या यहाँ पर रिवाइव हो पाएगा या फिर नहीं? वाइन ई-स्पोर्ट्स वॉर गए के प्लेयर को या फिर खिलाड़ी को नॉकआउट करेंगे उस ग्रेनेड से। डीआरएस गेमिंग के प्लेयर्स भी 4 एलिमिनेशन के बाद पीछे से करते हुए कुछ स्प्रेज और थर्ड पार्टी और यस यहाँ पर हुज़ैफा को डाउन करेंगे एंड फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। सो एज teams are coming in those fights, the third party and the proximity is set। ये जो बैटल ग्राउंड है बहुत ही जल्द कन्वर्ट हो जाएगा एक स्लॉटर हाउस के अंदर। The circle coming to a close as well, right? It's gonna be problematic for a lot of these teams. We're down to 6, by the way. 17 players still in. Boy and RQ the only ones with 4 players standing. And you can see the one surviving player inside of 4 tribes. He's just alive right now. He's just making sure that he gets as many points as possible to start the day off on a good note. This grenade could be scary. Killer YT will be doing no damage onto Demon. And the counter grenade will be dealing 6 damage. Killer YT out in the open, but the next block just reigns supreme against the UMP, I believe, that he had in the hand. And now Demon is going to get taken down. Ooh. Wait a second. It was not even DRS that got said. It's Shaka from War Guy. Long range stole that point. They're going to be happy with that. Man, oh man, War Guy, क्या performance and 4 stripes के T24 OP डाउन होंगे और शायद से 4 ट्राइब्स भी यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है। हम लोग को मिल चुकी है हमारी टॉप 4 टीम्स। राउंडो के मुकाबले के ऊपर 12 टॉप प्लेयर्स भी जिंदा रहेंगे और इस फाइट के अंदर प्रैग्रॉस बहुत अच्छा स्प्रे। 4 एलिमिनेशन यहाँ पर आरआरक्यू के पास। हम लोगों ने हालांकि देखा था, जो हम लोगों ने देखा था एक बार आरआरक्यू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास में 4 एलिमिनेशन से। तो देखिए कुछ चंद मिनट्स के अंदर और भी ज्यादा एलिमिनेशन लोगों ने लिए। 9 से 8 एलिमिनेशन कुछ 2 से 3 मिनट्स के फासले के अंदर इन लोगों ने ले लिया और आगे की तरफ बढ़ेंगे टीम आरआरक्यू। डीआरएस के फ्रैग को स्पॉट किया, कितना अच्छा स्प्रे और शायद से आरआरक्यू यहाँ से फॉल ऑफ करती हुई जेनफोर्स प्रैग्रॉस अपने कदमों पर लैपर फिनिश ऑफ हो जाएंगे। और फ्रैग को पता है यही है मोमेंट, लोहा है गरम और अगर तोड़ा मार दिया तो आरआरक्यू को शायद से एक 1v4 कर सकते हैं। डीआरएस फ्रैग नहीं, ही इज गॉन एंड डस्टेड। रिवाइवल को छोड़ा और S12 का कहर बचाया। 3 players now, that's all there are. 3 teams, I'm sorry, with 9 players in the server. RIQ, Warga, Boyne, once again surviving with 4 players till the end. Absolutely beautiful performance coming in from them in terms of survival. But in terms of elimination, they don't really have a lot to show. And they're the only one in the circle. So circle prediction rotations are on point. A bit of luck in their favor as well, to be really honest. That airdrop, I don't think is going to be looted by anyone right now. It's pretty scary, to be really honest. It's out in the open. Warga with 2, RQ with 3, and Boyne with 4 players standing. Clearly have the advantage, but let's see how these teams are going to be taking the fight. They will first drop 2 players on the side of RIQ, and RIQ not in the heat already. Pragos gets taken down. Ferris will be fired up as well. And now it all comes down to Genpod in a 1v6 situation. I don't think there's a lot that he can do. He may actually be able to take down a couple players on the side of Warrior, but that's about it. Boyne right now are going to be the one feeling really, really confident. Absolutely, Wargay or RRQ, they are surviving with 2 and 1 player. Wargay के रेस को यहाँ पर डाउन किया जाएगा। RRQ का वो आखिरी प्लेयर बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ शायद से ट्रबल देंगे। 1v2 कर दिया गया है। वाइन ई-स्पोर्ट्स, मेरी बोली शायद से पत्थर की लकीर। मैंने बोला था कि ये शायद से टीम चिकन डिनर लेके जाएगी, एंड आई डिड प्रेडिक्ट वाइन ई-स्पोर्ट्स आखिरी तक
4 प्लेयर्स के साथ में सर्वाइव करती हुई, और शायद से जेनपोस को भी यहाँ पे नॉकआउट करके फिनिश ऑफ कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे स्टोर के साथ में 4 प्लेयर्स पुश करेंगे एक साथ, तो एक अकेला खिलाड़ी क्या कर पाएगा? मेरी प्रेडिक्शन होती हुई सही, और देखिए वाइड स्पोर्ट्स लेके जाएगी विनर विनर चिकन डिनर। आई हैड अ रियली सिंपल एनालिसिस, क्योंकि पिछले फेजेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वाइन स्पोर्ट्स इनिशियल गेम के अंदर बहुत ज्यादा स्लो खेलती है, बहुत ज्यादा पैसिव खेलती है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू कैपिटलाइज दैट चिकन डिनर, एंड वही सेम चीज हम लोग को देखने में मिली। एंड पता नहीं, मेरे को कभी कभार थोड़ी बहुत वाइब आ जाती है कि शायद से ये चिकन डिनर लेके जा सकती है, ये टीम हो सकती है, एंड there we go, One Esports taking that winner with a chicken dinner. I see. I told you. I mean, see. I know you had the right prediction, but I told you. When you say something, it just it somehow manages to be right. Prediction god, you are that is, of course, and somehow I'm the one putting in the cast's curse on them. But yeah, anyway, what a great start for the side of Void. I mean, they're picking up the pace from where they left off here in Phase 1 Grand Finals. Unfortunately, they're pushed down to third position by 4 Tribes and Flash in 2 and 1 position respectively. But anyway, moving on now. We will get to see more of these teams coming up. And Wine, you can see they're using the same strategy that they did previously, surviving till the end with 4 players. That is one thing that worked out for them, and it still is working out for them. So that's good to see. But also really, interesting to see how 3-1-3 actually, played off here. And I was also really excited to see BTR stepping up. Up until one point, they were coming up on top on most of those fights. So it was really amazing to watch them play.
Watch out! Help! 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 Four, number 3, Egyptian petrol. Egyptian petrol. Leżał. Help! Miałem go w Polsce wytrzymać. Mach gaz sok nie skoczyły. No sobie. Ale böyle uç. Böyle. Help! Help! Böyle. Help! Bak, ne oluyor? Yolda. Help! Marked a location. Böyle. Help! Что-то было.
وشي بعد تخشمش. Help! رولando خشانة. بعد فولو. Help! يا كساتة ورس. Burada. Eu vou te colocar de óculos. Help! تعرف ولا راسك كيف متجاوز لا تخوان دورتك Help! نجيب باكستاني دي تعيش غلط يعني باكستان أنا يقولون لا شيء بس لا لا ما تشدي
او قبل ستانسي Agora explica. بودا ولا Ya da que carajara. Oh, تغطى olha, o graba aí, olha. تغطى O graba aí. O graba aí, não. لا كده Acho وضيف العنصر تشكي Manda uma amuleto, cara. eu balo. Help!